नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस बेहद खास और फोकस्ड विश्लेषणात्मक सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम भारत के राष्ट्रपति यानी संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक की पूरी संवैधानिक रूपरेखा को डीकोड करेंगे। हमारा टारगेट बहुत क्लियर है, इस जटिल विषय को ऐसे हिस्सों में तोड़ना जो न सिर्फ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या नेट जैसी परीक्षाओं के लिए अहम है, बल्कि जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे संवैधानिक आधार और चुनाव की प्रक्रिया से, फिर हम योग्यताओं और महाभियोग को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शक्तियों का वो विशाल शस्त्रागार, वीटो और अध्यादेश की कार्यप्रणाली, और अंत में क्षमादान की शक्ति के साथ साथ राष्ट्रपति की असली संवैधानिक स्थिति क्या है, इसका गहराई से मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, संवैधानिक आधार और निर्वाचन। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संविधान निर्माताओं ने देश के सर्वोच्च पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं चुना। इसका जवाब छिपा है हमारी संसदीय प्रणाली के मूल में। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे राष्ट्रपति एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नाम मात्र के प्रमुख हैं, वो बस राष्ट्र का प्रतीक हैं, जबकि जो असली पावर है, जो रियल एग्जीक्यूटिव शक्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती हैं। सोचिए, अगर राष्ट्रपति को भी सीधे जनता चुनती तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक टकराव पैदा हो जाता, राइट? दोनों कहते कि असली ताकत हमारी है। इसीलिए इस अनावश्यक टकराव को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का रास्ता चुना गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। इस निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट डालता है? यहाँ एग्जाम में एक क्लासिक ट्रैप होता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें कौन वोट करता है, इससे ज्यादा जरूरी ये याद रखना है कि इसमें कौन वोट नहीं करता। याद रखिए, इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के केवल और केवल निर्वाचित यानी इलेक्टेड सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। मनोनीत या नॉमिनेटेड सदस्यों को इससे पूरी तरह से बाहर रखा गया है। बिल्कुल, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स अलाउड। अब ये जो वोटिंग होती है, इसमें राज्यों और केंद्र के बीच गणितीय समानता कैसे सुनिश्चित की जाती है? इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, जिसे हम एसटीवी प्रणाली कहते हैं, उसका बेहतरीन उपयोग होता है। अब इसके पीछे का गणित देखिए। विधायकों के मतों का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है, और सांसदों के मतों का मूल्य कैसे निकलता है? सभी विधायकों के कुल मत मूल्य को आधार बनाकर। और हाँ, चुनाव जीतने के लिए महज बहुमत नहीं, बल्कि एक निश्चित कोटा पार करना बिल्कुल अनिवार्य है। संवैधानिक आधार को अच्छे से समझने के बाद अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति पद की योग्यताओं, उनकी शपथ और पद से हटाने की अंतिम प्रक्रिया यानी महाभियोग को समझेंगे। मान लीजिए किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो योग्यताएं क्या हैं? सबसे क्रूशियल पॉइंट है उम्र। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी ही चाहिए। इसके अलावा भारत का नागरिक होना, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना और किसी भी लाभ के पद पर न होना, ये सब एकदम मस्ट है। और हाँ, चुनाव गंभीरता से लड़ा जाए, ऐसी कोई भी ना खड़ा हो जाए। इसके लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करना भी अनिवार्य किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 61 पर, महाभियोग या इम्पीचमेंट। पहली बात, ये केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त संवैधानिक विरोधाभास है, और एग्जामिनर्स को ये पॉइंट फंसाने के लिए बहुत पसंद है। ध्यान से सुनिए। संसद के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे, वो महाभियोग में वोट कर सकते हैं। और इसके ठीक उलट, राज्यों के जो निर्वाचित विधायक चुनाव में वोट करते हैं, उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है ना कमाल का फैक्ट? इसे जरूर याद रखिएगा। पद की शर्तों को तो हमने समझ लिया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे भाग में, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दी गई कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय शक्तियों के विशाल शस्त्रागार में। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो लगेगा कि राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कैग या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, धन विधेयकों को पूर्व मंजूरी देना और संसद में बजट पेश करवाना, ये सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, आपको हमेशा याद रखना है कि ये सभी कार्यकारी शक्तियां
अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब नाम राष्ट्रपति का, पर असली फैसला कैबिनेट का होता है। कार्यपालिका शक्तियों को देखने के बाद आइए अब चौथे भाग पर चलते हैं। यहाँ हम संसद पर राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण विधायी नियंत्रणों, विशेष रूप से वीटो और अध्यादेश की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझेंगे। अनुच्छेद 1111 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से 3 तरह के वीटो होते हैं: अत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट, निलंबनकारी यानी सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। और इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है पॉकेट वीटो। आपको पता है, अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई भी बिल 10 दिन के अंदर लौटाना होता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में निर्णय लेने की कोई समय सीमा ही तय नहीं की गई है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत के राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो अनिश्चितकालीन है। बिल को बस पॉकेट में रख लिया। इतिहास में इन वीटो शक्तियों का इस्तेमाल कैसे हुआ, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1991 में आर वेंकटरमन ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। और सबसे मशहूर किस्सा है 1986 का, जब ज्ञानी जैल सिंह जी ने डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अक्सर हाई लेवल पॉलिटी एग्जाम्स में ये ऐतिहासिक उदाहरण सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें एकदम रट लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 123 की, यानी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। यहाँ सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये कि अध्यादेश संसद की कानून बनाने की शक्ति का कोई समानांतर शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह केवल तब लाया जाता है जब कोई अर्जेंसी हो और संसद के दोनों या कोई एक सदन सत्र में न हो। इसकी अधिकतम लाइफ सिर्फ 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप अध्यादेश के जरिए संविधान में संशोधन कभी नहीं कर सकते। अब क्या राष्ट्रपति अध्यादेश के मामले में पूरी तरह से इम्यून है? सुप्रीम कोर्ट के ये ऐतिहासिक फैसले साबित करते हैं कि ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के कार्य जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं। 1970 का कूपर केस एकदम साफ करता है कि अगर अध्यादेश लाने के पीछे कोई दुर्भावना या मैलिफाइड इंटेंट है तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और 1987 का डीसी वाधवा केस तो एक लैंडमार्क है, जिसने तय कर दिया कि अध्यादेशों को बार बार बिना विधायिका की मंजूरी के लागू करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। फाइनली हम अपने 5वें और अंतिम भाग में पहुंच गए हैं, जहां हम दया की न्यायिक शक्तियों यानी क्षमादान और इस सर्वोच्च पद की वास्तविक संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे। यहाँ एक और आम ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच का अंतर। हमेशा याद रखें, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी और सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं। राज्यपाल सजा को कम तो कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा को पूरी तरह से माफ करने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब एक क्षमादान भी 5 अलग अलग तरीके से काम करता है। पार्डन का मतलब है पूरी तरह से क्षमा कर देना, एकदम दोषमुक्त। कम्यूटेशन में सजा का नेचर बदल दिया जाता है, जैसे कठोर कारावास को साधारण में बदलना। रिमिशन में सजा की प्रकृति बदले बिना सिर्फ समय कम किया जाता है। रिस्पाइट में किसी विशेष परिस्थिति जैसे अपंगता के कारण सजा कम की जाती है। और रेप्रीव का मतलब है मौत की सजा को अस्थायी रूप से टाल देना। ये पूरा सिस्टम कार्यपालिका को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि अगर कोई न्यायिक गलती हुई हो या सजा बहुत ज्यादा कठोर हो तो उसे सुधारा जा सके। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल फैक्ट, 1978 के 44th संविधान संशोधन ने एक तरह से गेम चेंज कर दिया। इसने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वो कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। मतलब वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। उदाहरण के तौर पर 1997 में उत्तर प्रदेश और 1998 में बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश आई तो तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन जी ने उसे वापस भेज दिया था। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति के पास एक बहुत ही अहम परिस्थितिजन्य विवेक होता है। इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पर शासन नहीं। ये एक लाइन हमारे भारत के संसदीय लोकतंत्र में नाममात्र की कार्यपालिका के पूरे सार को समझा देती है। उनका पद महज एक राजनीतिक पद नहीं है, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता का परम प्रतीक है। तो दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा,
यदि राष्ट्रपति के पास एक अनिश्चितकालीन पॉकेट वीटो है जिसे कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, तो ये इकलौती असीमित शक्ति एक नाम मात्र की कार्यपालिका की सीमाओं को कैसे चुनौती देती है? क्या वो सच में सिर्फ नाम मात्र है? संवैधानिक शक्तियों के इस नाजुक बैलेंस पर विचार जरूर कीजिएगा। इससे आपको राष्ट्रपति पद के असली वजन का एहसास होगा। आज के इस विश्लेषणात्मक सत्र में बस इतना ही। Welcome, everyone. If you're gearing up for UPSC, BPSC, UGC Net, or any top-tier competitive exam, you are exactly where you need to be. Today, we're diving deep into the very apex of Part 5 of the Indian Constitution, the President of India. I'm going to walk you through a highly structured analytical explanation on this topic. We'll be decoding every crucial article, landmark, Supreme Court judgment, and core concept you need to know. So, grab your notebooks and let's get started. Here's our roadmap for today. We're covering 6 main pillars, starting from the constitutional basis, right through the electoral process, the key powers, and finishing up with a rapid-fire review of high-yield articles. All right, let's jump straight into Part 1, the constitutional basis and election of the president. Let's anchor our understanding with this brilliant quote from Dr. B.R. Ambedkar. He perfectly captures the essence of the president's role in our parliamentary system. Unlike the American presidential system, where the president holds real, on-the-ground executive power, the Indian president is the head of the state, but strictly a nominal executive. And if you recall, the Supreme Court strongly reaffirmed this exact position in the landmark Shamsher Singh case. The real executive power, that rests firmly with the Prime Minister and the Council of Ministers. Now, how does one actually get to this office? The president isn't directly elected by the public. Instead, we use an electoral college. For your exams, you absolutely have to know exactly who sits in this college. It consists strictly of elected members. We're talking elected MPs of both houses of parliament, elected MLAs of state legislative assemblies, and the elected MLAs of Delhi and Puducherry. The biggest trop examiner set for you? Nominated members and members of state legislative councils. Remember, they do not vote in this election. Let's look at the math behind the votes, because not all votes carry the same weight. The Constitution ensures uniform representation of states based on population. The value of an MLA's vote is calculated by dividing the state's population by the total elected MLAs and then multiplying by 1/1000th. An MP's vote value, on the other hand, depends on the total value of all MLA votes combined. This whole process uses the system of proportional representation with the single transferable vote, or STV, via a secret ballot. To win, a candidate has to secure a specific quota of votes. Oh, and here's a fun piece of trivia for you. Neelam Sanjeeva Reddy is the only president in India's history to be elected completely unopposed. Moving on to Section 2, let's look at the structural pillars, what it takes to qualify for this massive role, and the constitutional mechanism to remove a sitting president. Under Article 58, the baseline qualifications are clear. You must be a citizen of India, at least 35 years old, qualified to be a Lok Sabha member, and not holding any office of profit. But here's an interesting shift. Back in 1997, to weed out non-serious candidates, the rules were tightened. Now, a candidate needs at least 50 proposers and 50 seconders, plus a 15,000 rupee security deposit with the RBI. Also, following the 2018 amendment, the salary is set at 5 lakh rupees per month. And crucially, under Article 361, the president enjoys absolute immunity from any criminal proceedings during their term. But what if a president needs to be removed? That brings us to Article 61, impeachment. This is a quasi-judicial process, and it can only be initiated on one specific ground, violation of the Constitution. Either House of Parliament can start the process, but it requires a 14-day advance notice signed by 1/4 of that House's members. Now pay close attention here, because this is an exam favorite. Nominated members of Parliament actually participate in this impeachment process, even though they couldn't vote in the election. Conversely, the MLAs who voted in the election have no role in impeachment. Ultimately, the resolution must be passed by a special 2/3 majority in both houses. All right, Section 3. Let's shift our focus to the functional side of things, the vast powers vested in the president's office. What's truly fascinating about the president's powers is just how expansive they are. On the executive front, every major action of the government of India is formally taken in their name. They appoint the Prime Minister, the CAG, governors, and the UPSC chairman. Legislatively, they summon parliamentary sessions and nominate 12 members to the Rajya Sabha. Financially, a money bill can only be introduced with their prior recommendation. And on top of all that, they appoint Supreme Court and High Court judges and serve as the supreme commander of our armed forces.
Literally every major constitutional appointment flows right through this office. That brings us to Section 4, Veto and Ordinance Powers. These are incredibly high-yield topics for your exams. Let's break down Article 111. The president holds 3 types of veto powers. First is the absolute veto, where they just withhold assent completely, effectively killing the bill. Then there's the suspensive veto, where they return the bill for reconsideration. But if Parliament passes it again with just a simple majority, the president is bound to give assent. And remember, you can't use a suspensive veto on a money bill. Finally, the pocket veto. This is where the president simply takes no action indefinitely. Since our Constitution doesn't specify a time limit, they can just keep it in their pocket. Do keep in mind, though, that the 24th Amendment in 1971 completely stripped the president's power to use any veto on constitutional amendment bills. Let's map this constitutional theory to actual history, because these vetoes aren't just on paper. In 1954, Dr. Rajendra Prasad used the absolute veto on the PEPSU appropriation bill. Fast forward to 1986, and President Zail Singh famously used the pocket veto on a highly controversial Indian Post Office Amendment bill that threatened press freedom. Then, in 1991, R. Venkataraman applied the absolute veto to the MP's salary amendment bill. These historical milestones really show the practical weight of the office. Now, what happens when Parliament isn't in session and an urgent law is needed? Enter Article 123, the ordinance-making power. An ordinance has a maximum lifespan of 6 months and 6 weeks, but it's not a blank check. In the 1970 Cooper case, the Supreme Court ruled that the president's decision to issue an ordinance can absolutely be challenged in court if there's evidence of malicious intent or mala fide. And the landmark D.C. Wadway case in 1987 firmly established that bypassing the legislature by constantly re-promulgating the same ordinance is unconstitutional. It's a great example of the judiciary keeping executive overreach in check. Moving on to Section 5. Let's look at the nuanced judicial and situational powers, specifically pardons and discretionary actions. Under Article 72, the president has 5 specific pardoning powers. Let's lock these into your memory for the exam. Pardon completely wipes the slate clean. Commutation swaps a harsher punishment for a lighter one, like changing a death sentence to life imprisonment. Remission reduces the time of the sentence without changing its character. Respite grants a lesser sentence due to a special circumstance, like a severe disability or pregnancy. And reprieve is just a temporary stay of execution, usually for a death sentence. And a quick pro tip, as per the approved Sudhakar case, the president's pardoning power is not entirely immune to judicial review. Now, here is a classic trap that examiners love to set. What is the exact difference between the president's pardoning power under Article 72 and the governor's power under Article 161? The crucial point is this. The president can pardon sentences handed down by military courts or court-martials. The governor cannot. More importantly, only the president has the power to fully pardon a death sentence. A governor can suspend, remit, or commute a death sentence, but they cannot fully pardon it. So is the president bound by the advice of the Council of Ministers? The 42nd Amendment said yes, absolutely. But the 44th Amendment tweaked this, giving the president the right to return that advice for reconsideration at least once. We called this situational discretion. A brilliant example of this was President K.R. Narayanan in the late 90s. In 1997, he boldly returned the cabinet's advice to impose president's rule in Uttar Pradesh. And he did the exact same thing for Bihar in 1998. In situations like a hung parliament or the sudden death of a prime minister, this discretionary power becomes a vital constitutional safeguard. Finally, we've reached Section 6. Let's do a rapid-fire review of the most critical, high-yield constitutional articles you need to memorize. I'd highly recommend taking a quick screenshot of this. These are the exact provisions tested over and over. You have Article 52, establishing the office, and 53, vesting the executive power. 54 and 55 cover the election mechanism. Article 58 outlines the qualifications, while 61 gives us the impeachment procedure. Then we have 72 for pardoning powers, and 74, which mandates the Council of Ministers to aid and advise the president. Continuing that quickfire review, Article 111 is your veto power, and 123 is the ordinance power. Article 143 is super important. That's the president's advisory jurisdiction to consult the Supreme Court. Then the big 3 emergency provisions, 352 for national emergency, 356 for president's rule, which, by the way, was deeply shaped by the landmark S.R. Bomai case, and 360 for financial emergency. Finally, Article 361 providing that essential legal immunity to the office. So, having unpacked all of this, from the historical usage of vetoes to judicial checks on ordinances and the bold situational discretion shown by past presidents, I want to leave you with a question.
Given everything we've covered, do you think the office of the President of India is truly just a rubber stamp, or is it actually a crucial constitutional safeguard holding our democracy together? Have a think about that.